Hey everyone, I am back with yet another video on this series of how to write a tutorial. This is the part 4 of the whole series. You can check out the entire series on my channel. This video is relevant for people who have been admitted in the MA History program of CHS JNU. CHS is actually the Center for Historical Studies and it comes under the School of Social Sciences, or as we call it, Triple S. This you see here is the Triple S 2 building, whereas CHS is actually located in the Triple S 3 building. Okay, so today's topic is basically we'll be looking at a tutorial sample, which is my own tutorial that I had written in my 4th semester, and I'll be showing you the basic formatting, how to go about it. We'll also look at how to design the first page. There is no fixed rule regarding this, but still, if you want an idea, I can tell you. And also about how to go about the plagiarism check process that is there. So let's get started. So this right here that you see is a first page of one of my tutorials at CHS. So let's quickly look at what all details I've included. This is the logo of JNU. It's optional. You can just copy it from Google. Then this is the name of the center, important to mention. This is the name of the school, School of Social Sciences, important to mention. Then JNU, the name, New Delhi, India, that's fine. Then yes, now most essential things starts from here. Subject, the code of the subject, the name of the paper that you have to mention. You have to mention which tutorial it is, first or second. Then you have to mention which semester is going on. So if you don't know, from August to December the semester is called the monsoon semester, and from January to May the semester is called the winter semester. Okay, so you can mention that. Then the question, what is the question of the tutorial? So highlight the major concepts of dependency theory. Is it useful in analyzing underdevelopment? Then I have mentioned my own personal details, my name, my registration number, the course that I am enrolled in, along with my stream, which was modern, and which semester I was part of, my own email ID, and my mobile number, so that the professor can easily contact me. Then you may also mention the name of your professor, okay, and just check their name, what the faculty, get the spelling right, okay. It would not look good if you don't write the correct spelling of your own professor. And the date of submission is important. If you don't get this printed, then while you are submitting it in the CHS office, they will ask you to write it write it using a pen, and you will also need to sign when you are submitting. Okay, so this will be the first page. Let's move on. So now from here, as you can see, I have put page numbers. This is also very essential. I'll tell you how to do it. And then you write the question again, what the question was. You write it again. If you want, you can read and see. I've just given an example of how to introduce that, the way I've explained it in my video previously. I have put a context of the dependency theory, and I've also put the definition of some key terms, so you can just read it if you wish. I've also mentioned the central argument, so you can pause the video and read it if you want an idea. Yes, moving ahead. Here I have also mentioned the outline of the entire paper, okay, like what is the way in which I have grouped my ideas. So it is basically grouped, it has been grouped author wise, okay, the works that I have completed, so I've put them in that manner. Why? Because this is the chronological order in which the dependency theory has progressed. So that's why I have grouped it in this way, and I have mentioned it here, and here my introduction ends, and now the body of my tutorial starts. Now let's look at this. So here I have put a heading so that it's easily identifiable, this that what to expect inside the reading, inside the heading.
So this is the first time I'm mentioning this author, and therefore his full name has been mentioned, and the name of his work has also been mentioned here when I am mentioning his name for the first time. Then after that, when I am mentioning only his surname or his title. Then just have a look, this is what footnotes is. Okay, footnotes I have explained in my previous video. So this is what footnotes is, and in the first time that the footnote has been, when the text has been referred, yeah, here you see the one. So this is the first time. So one, for Paul Baran, you have the full details. Okay, the name of the author in full, his work, publishing details, year of publishing, as well as the page number. But second time, when the same author has been referred, we use IBID. One more thing that you need to take care of is the fact that on any new page, it cannot start with IBID. Okay, you have to write it in short. Here I have mentioned it in short, only Baran, the name of the work, and page number. Okay, and then you can use IBID. So the first one cannot be IBID on any new page. Hope that is clear. Then this is an example of like a critique that I have given to Baran. So you can pause the video and read it if you wish. Yeah, and here also I have mentioned a counter to his argument, so you can read and see to get an idea about how you can go about. Okay, so then I have not shared my entire tutorial here because that wouldn't be right, but I have tried to include examples of what I have already explained. Now we'll quickly come to the conclusion part. So in the conclusion here, the style that I have chosen is to indicate the larger implication of the dependency theory, and again you can pause and try to read what was given if you wish. Now now the conclusion is over, and we move to bibliography. Now two things you need to take care of is bibliography will always start on a new page. You cannot just continue it where your conclusion has ended. Okay, and it is not numbered. Okay, you can look at this, it is not numbered, no bullets, nothing, and in Chicago style I have made it. And yes, that's about bibliography. Then now your tutorial has ended. Now I'll just tell you some basic things about the formatting. So if you don't know, once you have completed your entire tutorial, you can select all the text that you have written by pressing Control on your keyboard plus A together. Control plus A will select everything that you've written, and then you can change these things, and be very sure about keeping all the text in the same, the size and the style. Okay, it does not look good if you use different fonts within the same tutorial. So once you have selected all the text, what fonts we use? We use Times New Roman. Size should be 12. The spacing that I have used here in my tutorial is 2.0. Sometimes this feels too much, so I think 1.25 to 2 is fine. Okay, you can ask your professor about this. And the color of the text is black. You insert the page numbers. Okay, I'll tell you how to do it, and references, from references you insert the footnote. Now just let's look at MS Word ka this screenshot that I've added. So this is the top ribbon of MS Word. This here that you see, this blue thing is called the top ribbon. Now in the top ribbon, in the home section, you can change the font that I just told you, change the size. Okay, you can bolden your headings from using this B. Okay, you can change the text color using this A, and here you should keep a note of this, that this would help you change the spacing. Spacing means the space between two sentences. Okay, so it can be, I think, between 1.25 to 2 is fine. Okay, here these are two can be used for the alignment of the text. Okay, alignment means ऐसे अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा तो या तो वो ऐसा दिखेगा या फिर वो पूरा ऐसा दिखेगा. तो इन दोनों में से ही आपको चूज़ करना है. ये दोनों चूज़ नहीं कर सकते आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए.
बुलेट्स में बिल्कुल नहीं लिखना है, कहीं भी बुलेट्स यूज़ नहीं करने हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं यूज़ करना, इन दोनों चीज़ का खास ख्याल रखें। और ये जो है A to Z वाला पार्ट, दिस इज़ फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो फॉर एग्जांपल मैंने बिब्लियोग्राफी में लिस्ट बना लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, राइट। इसको करने के लिए वंस आप पूरी लिस्ट बना लें, उसको सेलेक्ट करके वंस यू प्रेस दिस ना A to Z, तो वो खुद ब खुद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। देन ये हमने होम का सेक्शन का देखा। इंसर्ट में जाके आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं थ्रू इंसर्ट। देन डिज़ाइन में जाके आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आई हैव पुट बॉर्डर्स इन माई ट्यूटोरियल एज यू कैन सी, बट दिस इज़ ऑप्शनल, ओके। देन मार्जिन्स का क्या मतलब होता है, अगर ये हमारा पेज है ना, तो टेक्स्ट कितनी दूर पे, ये जो इसको मार्जिन कहते हैं, और इसको आपको नॉर्मल पे करके रखना है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। ये नॉर्मल पे रहेगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने से नीट एंड क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा आपका ट्यूटोरियल। फिर ये है रेफरेंसेस, इससे आप इंसर्ट फुटनोट्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको बिब्लियोग्राफी वाले वीडियो में भी बताया था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये है अबाउट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का पहले अगर मतलब आपको नहीं पता है, प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि अगर आप किसी का, दूसरे पर्सन का काम को चोरी कर रहे हैं, ठीक है, बिना उनको क्रेडिट दिए, विदाउट गिविंग क्रेडिट, इफ़ यू आर कॉपिंग फ्रॉम समवेयर एंड यू आर यूजिंग द इंटरनेट टू डायरेक्टली कॉपी, these are things that are not accepted, okay, and you can get caught and the professor can catch you, and that would not be very nice, okay. So if you are writing something which is not your original work, you are copying without giving credit to the particular author, लेख की चोरी बिना उचित श्रेय दिए, उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। इसको प्रोफेसर्स एक प्लेजरिज्म रिपोर्ट आपसे मांग सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है कि वो रिपोर्ट कैसे बन के आता है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। और ये जब मैं बना रही हूँ, ये अभी जुलाई 2025 का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो दिस इज़ द ईमेल आईडी ऑन विच यू हैव टू सेंड द ईमेल टू गेट द प्लेजरिज्म चेक्ड। उसमें ईमेल में आपको क्या क्या अटैच करना है, तो अटैच आपको उसके साथ करना है वर्ड डॉक्यूमेंट। इस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है वो ज़रूरी है कि उसमें आपका नाम, रोल नंबर, सेंटर, प्रोफेसर, कोर्स का नाम, एक्सेट्रा जितने भी डिटेल्स थे वो होने चाहिए। और दूसरी चीज़, वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है, पीडीएफ नहीं भेजना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके साथ और क्या चीज़ अटैच करनी है, अपने आईडी कार्ड का दोनों साइड अटैच करना है, और तब ये मेल आपको भेजना है। लगभग आपको 1 दिन का समय इस काम को करने के लिए रखना होगा, तभी वो लोग, हो सकता है कभी पहले भी दे दें आपको रिप्लाई, बट एटलीस्ट 1 दिन का टाइम इसके लिए रखिए। और दूसरी चीज़ कि इतना भेजने के बाद आपको उसकी रिप्लाई में क्या आएगा, एक रिपोर्ट सा बन के आएगा। टर्न इट इन नाम का हमें तो अभी तक इसका रिपोर्ट आ रहा था, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर अपना चेंज भी करें। तो इससे रिपोर्ट में क्या पता चलेगा, अगर 5% या उससे कम आपका रिपोर्ट में आता है प्लेजरिज्म, इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा कहीं से कॉपी नहीं किया है, वो उतना चलेगा, इट्स फाइन, ओके। बट अगर 5% या फिर आप एक बार प्रोफेसर से भी पूछ सकते हैं कि कितना परसेंटेज इज़ फाइन, तो आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना वो दैट वुड नॉट लुक नाइस कि आपने 5% या एटलीस्ट 10% से ज़्यादा का अगर प्लेजरिज्म आ रहा है, तब तो बिल्कुल ही नहीं, वो ट्यूटोरियल इज़ नॉट फाइन, उसके आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक बार प्लेजरिज्म रिपोर्ट वहाँ से बन के आ जाए, देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं, और उसके बाद उसका भी प्रिंट आउट लगेगा, और प्लस अपना जो आपका ट्यूटोरियल है खुद का, उसका दोनों का प्रिंट आउट आपको वहाँ CHS के ऑफिस में सबमिट करना होगा। प्लेजरिज्म चेक यूजुअली सारे प्रोफेसर्स नहीं मांगते हैं, तो आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि किनको, मतलब जिनको भी रिक्वायर्ड है वो आप बता देंगे आपको कि हाँ प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी लेके आना है साथ में, ठीक है। और बस दोनों चीज़ों का प्रिंट आउट करके अगर मांगेंगे तो दोनों लेके जाके CHS की जो ऑफिस है वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। उस दिन का डेट नोट किया जाएगा कि आपने कब अपना ट्यूटोरियल सबमिट किया है, डेडलाइन पे किया है या बाद में किया है,
तो वो चीज़ नोट होगा और उसके बाद फिर आपको प्रोफेसर्स बताएंगे कि कब आपको ट्यूटोरियल डिस्कशन के लिए जाना है। और डिस्कशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डिस्कशंस जो हैं वो थर्सडेज़ को होते हैं यूजुअली, और उसमें आपको कुछ भी कुछ सबमिशन नहीं करनी होती है, बस अपना जो ये पूरा ट्यूटोरियल आप बनाते हो, इस पूरे ट्यूटोरियल को आपको अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करके जाना होता है। और इसी में आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी नोट्स बना सकते हैं अगर आपको बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह बना के जाइए। और फिर आपको वहाँ पे अपना प्रेजेंट करने का टाइम दिया जाएगा और उस पर 2-4 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके क्लासमेट्स भी पूछ सकते हैं, प्रोफेसर भी पूछ सकते हैं, और वो आप वहाँ पे डिस्कशन दे के आएंगे। और हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि आपको फुल्ली इंग्लिश में करने के लिए बोला जाएगा, तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखिए। और जो भी चीज़ आपने लिखा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके बिब्लियोग्राफी में आपने जितने भी जो भी रीडिंग्स लिख रखे हैं उसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मतलब किस ऑथर को आपने यूज़ किया है, तो उसका आपको फुल्ली पता होना चाहिए। और रीडिंग्स के मामले में अगर आप खुद से अपने मन से कोई न्यू रीडिंग्स इंक्लूड कर रहे हैं तो एक बार प्रोफेसर से ज़रूर इस बारे में पूछ लीजिए कि न्यू रीडिंग्स इंक्लूड करनी है या नहीं, और वो जैसा बोलेंगे उस हिसाब से फॉलो कीजिए। वरना जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन कौन से रीडिंग यूज़ करने हैं उसी पे स्टिक करना ज़्यादा अच्छा है। अपने मन से खुद से एडिट्स मत कीजिए, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है वो ज़रूर फॉलो कीजिए कि हाँ, अगर उन्होंने बोला है, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि एक रीडिंग कंपल्सरी दे रखी है और कुछ रीडिंग्स ऑप्शनल में दिया है कि आउट ऑफ दीज 3 यू कैन डू एनी 2। तो ये चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि कौन सी कंपल्सरी है, कौन से कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं। वो सब रूल्स बिल्कुल फॉलो कीजिए अच्छे से। So yes, I think that's it. All the very best to you all, and if you want any more videos or any on any topic, you can tell me. I will try my best to make, if I can help, I'll try. And all the best. Share it with your classmates so that they also can get the benefit out of these videos that I have made for you all. And yeah, thank you so much for watching.